Yes. Okay, so we were learning about operating system and we have learned operating system is work as an intermediator between hardware and सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो भी काम कंप्यूटर में करना है, किसी प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है या मेमोरी मैनेज करना है या फाइल मैनेज करना है, सभी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एंड वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कैन बी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कैन बी लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू और एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम available, each and everyone having their own advantages and disadvantages, but the main function of all the operating system is same. Okay, so now with the help of this video you will learn more about operating system so that you have an understanding of its desired purpose. We will be covering key concepts and definitions, whilst briefly touching upon the essentials of operating systems. So, what is an operating system? In simple terms, it is the chief program that manages all of the hardware and software. It has control of every process, file, section of memory, and device. It is very important as it works as a middleman, making sure both hardware and software interact correctly. Windows, Mac OS, Linux, and Unix are the big operating system contenders. Okay, so operating system work as a middleman between hardware and software, and these are some example of different operating system. As you can see, this is the example of symbol of Windows operating system. Then we are having Linux, Unix, Ubuntu operating system, and last we are having Apple Mac operating system. Yes, and all have their own advantages and or disadvantages, but they are all based off the same concept. There are four essential managers of every operating system. Okay, so yesterday we have learned different functions of operating system, and these are some basic or you can say essential function performed by a operating system. Now what is the meaning of essential? Means जरूरी. तो ये जो चार काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को करने ही पड़ते हैं. So these are some essential function operating system has to perform. And they all work together like a team to get jobs completed. The operating system works as their boss and makes sure they are all working in harmony. The memory manager is in charge of the main memory. It scans every request for memory space and checks if it is valid. It allows allocation of memory spaces that are not taken up already. Memory spaces may need to be deallocated to free up space for other requests. The process. Okay, so as you can see, memory management. Now what is the meaning of memory management? See in this example only. Spaces that are not taken up already. देखो जैसे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है with the help of RAM memory. Okay, we have studied about this RAM memory, Bhavna. That's why I am explaining the video. Okay, each and every step I am explaining you myself also, so that you can understand if you are having some issues in video. Okay, so as in this example you can see, this is an example of RAM memory. We have studied about RAM in last chapter, random access memory, and I have told you whatever work we are doing with that work is happening in the RAM memory only. तो अगर आप अपना मीडिया प्लेयर खोल रहे हो, वर्ड खोल रहे हो, पावर पॉइंट खोल रहे हो, अपने कंप्यूटर की आप जो भी एप्लीकेशन खोलते हो वो सब किस मेमोरी में ओपन होती है? आपकी रैम मेमोरी में. ठीक है, तो जैसे ही आपने ओपन की रैम में आपको स्पेस मिल जाएगा. जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 मीन्स आपने यहाँ पे मीडिया प्लेयर खोला, फिर आपने पावर पॉइंट खोला, फिर आपने नोटपैड खोला. जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में खोलते हो दैट विल बी ओपन इन योर रैम. ठीक है, जैसे ही आप खोलते जाओगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता जाएगा? रैम में उसको स्पेस देता जाएगा. बट जब आपने कुछ एप्लीकेशंस बंद किए, सपोज इसमें से आपने नोटपैड को बंद किया था जो जॉब नंबर 4 में था, तो क्या होगा? ये स्पेस आपका फ्री हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. यस भावना, टेल मी बेटा. Yes, tell me what happened. Your voice is not coming. My voice is also not coming.
Then please check settings from your side, Bhavna. I can see my speaker, my video is working properly, beta. Check settings from your side. Arohi, are you having voice and audio issue? So Bhavna, please check connection from your side, okay? Okay, so in this way, operating system does the memory management. Next, we are having process management. May need to be deallocated to free up space for other requests. The process manager decides how to allocate the brain of the computer, known as the central processing unit. It is necessary that the process manager keeps track of the status of each process. It has to handle jobs as they enter the system and manage each process that is associated with those jobs. The device manager must. Okay, so next we can see the function is process manager. So all the processing done by a CPU. CPU stand for central processing unit. Okay, so कौन सा process कौन से time पे execute होगा, ठीक है? Execute means प्रोसेसिंग कब होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला 1+2, तो आप अपने माइंड में क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे. 1+2 क्या होता है, 3 होता है. तो ऐसे ही जब भी आप कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हो तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू. सीपीयू क्या करता है, उस कमांड को प्रोसेस करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट. तो वो जो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवाइस मैनेजर. Monitors every device, channel, and control unit. It has to choose the most efficient way to allocate all of the system devices that are connected to the computer. USB sticks, printers, and external hard drives are examples of this. The file manager checks every type of file that is on the system. This means data files, program files, compilers, and installed applications. It sets permissions so that certain users can only see certain files. So when you log into your guest account, you cannot browse through the administrator's files as you do not have the permission to do so. Another manager worth mentioning is the network manager. This provides a way for users to share hardware and software resources while also controlling the user's access to them. So we now understand how it works under the hood. So how do we, the user, interact with the operating system? So as you can see, now what example he has just explained. So if you will log into your computer as a guest account, then you will not be able to access any file of administrator. Means जो उस कंप्यूटर का एडमिन है, आप उसकी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही काम को उस सिस्टम पे कर सकते हो, ठीक है. Now we will see with one more example. We rely on the use of a user interface. This gives us a visual understanding of what we are trying to do when we interact with the system. So when you click and hold a file to move it into a folder, you're making the manager's work to carry out the request. In the next few tutorials, we will be digging deeper into managers and looking at how they work together. This has been Sean, and do not forget to subscribe to the SMK. Okay, so now I can yes, Bhavana, as I have told you, it is issue from your side, because if everyone else is able to hear, they are not having any audio issue, then it might be issue from your side, beta. Because everyone is saying, ma'am, no issues, but only you are saying issue is there, then you have to check your headphones. Okay, now we will continue our reading part of chapter number 3. Okay, so yesterday we have learnt about different functions performed by operating system, and now we will have a look upon some commonly used operating system. Page number 41, chapter number 3. Okay, so first one we are having DOS, DOS. DOS stands for Disk Operating System.
The full form of DOS is Disk Operating System. It is an operating system for single user. Now what is the meaning of single user? Means एक टाइम पे एक ही यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है. ठीक है. It has command line interface, which means you have to type the commands in DOS to interact with operating system. अब विंडोज में क्या आता है, आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, आपको कुछ भी खोलना है, आप नाम लिखोगे, सर्च करोगे, खुल जाएगा. बट डोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, सब कुछ एक ब्लैक स्क्रीन होती है, लाइक दिस. ओके, इस तरह की ब्लैक स्क्रीन होती है. अगर आपको नोटपैड भी खोलना है तो आपको कमांड के थ्रू नोटपैड खोलना पड़ेगा. ठीक है. इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता आपके डोज में. नेक्स्ट, it is very simple operating system which occupies very less memory in computer because this one is having only command interface. तो जो इसके स्पेस ऑक्यूपाई करता है बहुत कम होता है as compared to Windows. Next, some of those operating system are Mac DOS, MS DOS, Apple DOS, IBM DOS. मीन्स जितनी भी कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उनका अपना एक डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्पल है, उनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. आईबीएम है, उनका भी अपना एक डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ डोज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वी आर हैविंग विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. Okay, so Bhavna is saying, ma'am, please explain DOS. Okay, DOS stand for Disk Operating System. It is an operating system for single user. ठीक है. DOS की full form क्या है? Disk Operating System. And now what is the meaning of single user? Means अगर आपने इसको किसी सिस्टम पे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया है तो एक टाइम पे ओनली एक यूजर ही इस पे काम कर सकता है. विंडोज में ऐसा नहीं है. विंडोज में एक टाइम पे 10 यूजर भी काम कर सकते हैं. रक्षा पेज नंबर 41. बट डोज में एक टाइम पे ओनली वन यूजर कैन वर्क. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डोज इज एन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, इट हैज कमांड लाइन इंटरफेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस? मीन्स अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, कोई भी काम करना है XYZ आपके कंप्यूटर में, तो आपको टाइप करना पड़ेगा, लाइक ओपन CMD, ओपन नोटपैड, ऐसे लिखना पड़ेगा. आप डायरेक्ट लिख के क्लिक करके माउस से इसमें नहीं काम कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज वेरी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑक्यूपाइज वेरी लेस मेमोरी इन कंप्यूटर. एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज आपका कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. और ये कुछ एग्जाम्पल हैं MS DOS, Apple DOS and IBM PC DOS. Clear? Now last we are having Windows, Microsoft Windows. As you all know, what is the meaning of Windows? You all are using this operating system only, right? तो आपके घर पे अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, I am sure all will be having Windows operating system only in their computer and laptop. Windows is widely used operating system developed by Microsoft. तो Windows किसने बनाया था? Microsoft. For personal computer, it was first made available in 1985. तो सबसे पहले विंडोज कब अवेलेबल हुआ था? इन 1985. बच्चा, Windows in this system, as you can see on the screen, we are having Windows 10 operating system. अब विंडो में भी डिफरेंट वर्जन है. Windows 7 है, Windows XP है, Windows 10 है, Windows 8 है, Windows 11 है. ठीक है. तो आपके कंप्यूटर में अभी जो लेटेस्ट वर्जन विंडोज का चल रहा है मोस्टली 10. नेक्स्ट, विंडो इज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GUI? GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके. And DOS is your CUI. CUI stands for Command User Interface. You can note it down. In DOS we are having CUI. CUI stand for Command User Interface. Okay. So in DOS we are having
कमांड यूजर इंटरफेस, क्योंकि आपको सबको कमांड लिख के हर काम करना पड़ता है. इन विंडोज वी आर हैविंग GUI. GUI stands for graphical user interface. Okay, and these are example of different OS. OS stands for operating system. Is it clear to all of you? So DOS is your CUI. CUI stands for command user interface. Window is your GUI. GUI stands for graphical user interface. Okay, so window is your GUI based operating system. Till date, various version of Windows has been launched, and the latest version of Windows is Windows 10. So in this system, I am also using Windows 10. Is it clear? Yes बेटा, बुक में CUI नहीं है, बट मैंने आपको वैसे बता दिया. ठीक है कि विंडो आपका GUI है और DOS आपका CUI है. So you can just write it down in your book here. CUI stands for command user interface. Okay. So next, full form of DOS is disk operating system. You know that thing. Next, latest version of Windows is Windows 10. And next we are having Linux, Unix. All these things we will discuss in next class. Okay. Now tell me if you are having any kinds of doubt related to today's session.